भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि यच्छेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च नियत्रेयशकरा उभो तयोतु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोचते। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकं प्याथितसंयो सम्यगुभयो विन्दते फलं यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिभ्रं न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पुषन् जिघ्रन्न शन्न गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसर्जुगुहणनुमो विषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावतु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् चित्पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ये तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तदबुदयस्तदात्मानः तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाम्। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूने चैव च पाके च पण्डिताः समदर्शिनम्। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्येथितं मनं निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। न प्रहसि प्रियं प्राप्य न द्विजित् प्राप्य चाप्रियं धीरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मने यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते मूढम्। शक्नोति ह्यसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नर यो अन्तसुखो अन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यम्।
योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मोक्षाय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूतिते रता कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शाकुता बहिर्बाह्य चक्षुस्त्वेवान्तरे भ्रुवो प्राणः पानो समो भूत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुने मोक्षपरायणम् विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतापसां सर्वलोकमहेश्वरं सोऽहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषदुपनिषद्विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेव 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 श्री कृष्ण वासुदेव नारायण हरि ओम।